Hello and welcome to this very powerful video where I read a book called The Hook Model and I'm going to share that with you. If you wish that people should be hooked to your products and services and your coaching programs, this program is going to really help you. This video is going to really help you to get people hooked to your coaching programs. How did I apply it in my company and how can you do it as well? Quickly, let's see. How can you form habit of people to attend your coaching program? कैसे लोगों की आदत ही बना दें कि वो आपकी कोचिंग प्रोग्राम में आए so that your attendance goes up, the implementation of your content goes up, the implementation of your content goes up, the results of the people go up, your time becomes very valuable and your value goes up, right? First thing, कोई भी trigger होता है. So that's an external notification to join a marathon. Like for an example, marathon. So what is a marathon? So marathon is nothing but a program which I do that is twice a week. है ना? So for example, Tuesday, Friday, 7 p.m. होता है वो. We do this program, which is, we call it a marathon, and we run it for a few weeks, like say 21 days, so it's like 6 sessions, right? 3 weeks, 3 into 2 is 6 sessions. So external notification हम इनको भेजते हैं कि भाई join the marathon. किस चीज़ की habit form करवा रहे? To join the marathon, to enjoy the marathon and keep attending the marathon. You got the point? तो हम उनको external notification भेजते हैं. क्या हो सकता है external notification? WhatsApp हो सकता है, direct WhatsApp हो सकता है, ग्रुप WhatsApp ग्रुप का हो सकता है, ईमेल हो सकता है, ये सब करते हैं हम. ये external notification देते हैं. For an example, याद करो, आज आप Instagram खुद ही जाते हो, खुद ही मन करता है, YouTube पे खुद ही मन करता है, जो भी आपका फेवरेट है, Snapchat. और शुरुआत में they gave you a lot of external notifications. You remember that? Long time back, ऐप पे आता था, ईमेल पे आता था. आपको इसने हाई भेजा, इसने कमेंट किया, इसने लाइक किया. टॉक अबाउट 5-10 years back. So similarly what you are using is the same strategies to trigger them with different notifications so that they get to know, okay, there is something, right? They join the marathon, मतलब सेशन में आ जाते हैं, Zoom सेशन में आ जाते हो. So easy action to take होना चाहिए. He or she joins the marathon session. That's a click. ईमेल आया, व्हाट्सएप आया, लिंक आई, इस पर क्लिक किया. फेसबुक या इंस्टाग्राम या जो भी यू गेट यूज्ड टू, जिसके लिए आपकी हैबिट बन चुकी है, जिस पे आप हुक हो चुके हैं सोशल मीडिया पे, इट ओपन्स डायरेक्टली. कोई बहुत लंबा प्रोसेस नहीं होता. दैट्स कॉल्ड एन एक्शन. ट्रिगर के बाद क्या आता है? एक्शन. एक्शन के बाद क्या आएगा? रिवॉर्ड. ट्रिगर आया, ईमेल आया, व्हाट्सएप आया, ज्वाइन द मैराथन, उसने क्लिक किया, ज्वाइन किया. वैरायटी इन रिवॉर्ड होना चाहिए. ऑसम लर्निंग एक्सपीरियंस दे दिया, ये एक हो सकता है. दैट्स अ रिवॉर्ड, इजंट इट? Isn't this a reward that people get an amazing experience? They learn what they really want to do, and it's like punches, good motivation. Sometimes you give them free merch. Sometimes you put them into teams and make them a leader. That's what is variety of reward. एक जैसा नहीं होना चाहिए. सिर्फ आप उनको अच्छा एक्सपीरियंस दे रहे हैं, अच्छा सिखा रहे हैं. हर बार कुछ अलग होना चाहिए. हम उनको अवार्ड्स दे देते हैं, हम उनको रिकॉग्निशन देते हैं, हम उनको हॉट सीट पे ले लेते हैं, स्पॉटलाइट पे ले लेते हैं. You get my point? Multiple variety of rewards होना चाहिए. Every session you have a variety. आज क्या होगा? Maybe in one of the sessions they are making a video. In one of the sessions they are filling the worksheet. In one of the sessions I'm helping them to create a course content. You get the point? In one of the sessions I'm putting them into teams. There has to be a variety in reward. This is very important. Same reward होता है तो वो predictable हो जाता है. Like for an example, every time you get a like on your Facebook, Instagram photo, you get an email, you click, यार वही होगा, वही like आया होगा. You see that? But sometimes you get a comment, sometimes you get this, sometimes someone sent you a friend request. It's a variety in reward of the notification trigger which they sent you. You took action and you got a different reward every time. Very important in your marathons to do that. After that is the investment. Very important again. Reward हम उनको दे रहे हैं, investment वो कर रहे हैं इस कोचिंग प्रोग्राम. फॉर एन एग्जाम्पल, आप कमेंट करते हो, दैट्स एन इन्वेस्टमेंट विच यू आर डूइंग, मे बी इन अ कोचिंग प्रोग्राम, मे बी ऑन अ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, मे बी एनीवेयर. यू कमेंट करते हो वीडियो के नीचे. इज वी आस्क देम टू समराइज देयर लर्निंग, व्हाट दे लर्न टुडे ऑन द फेसबुक ग्रुप, ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप, ऑन द स्लैक चैनल ऑफ अल्फास. Summarize your learning of this and we ask them to complete a task. We are always giving a task every time. अगर उनका इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ तो वो hooked नहीं रहेंगे. For an example, am I hooked on Facebook and Instagram? Absolutely. YouTube? Absolutely. Why? Because I am invested. I invest a lot of in my ads. So I see कितना क्या perform कर रहा है. You see that I'm hooked to it because I'm invested into it. 3 टाइप के इन्वेस्टमेंट हो सकते हैं: टाइम, एनर्जी, मनी. आप मनी नहीं कर रहे बट टाइम और एनर्जी तो डेफिनेटली उनका हुक होना चाहिए. उनको भी कुछ डालना. दे हैव टू पुट समथिंग आफ्टर द सेशन और ड्यूरिंग द होल प्रोसेस. अगर ये आपने ट्रिगर किया,
एक्सटर्नल नोटिफिकेशन दिया, एक्शन लिया, उन्हें क्लिक किया, उनको रिवॉर्ड मिला और उन्हें इन्वेस्ट भी किया। अब वो अगर ये मल्टीपल टाइम्स होता जाएगा, व्हेन दिस साइकिल इज रिपीटेड, यही साइकिल बार बार हो रही है, इन्वेस्ट करते फिर ट्रिगर होता है, अगला सेशन होता है, फिर एक्शन होता है, रिवॉर्ड होता है, इन्वेस्टमेंट होता है, मल्टीपल टाइम्स चलता जाता है कहीं पे भी, चाहे वो कोचिंग प्रोग्राम है, चाहे वो सोशल मीडिया है, और एनी बिजनेस और एनी सर्विस और एनी प्रोडक्ट। व्हेन दिस साइकिल इज रिपीटेड मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स, द ट्रिगर कम्स फ्रॉम विद इन and the person is hooked. Now did you understand this? ये जो ट्रिगर था, ये एक्सटर्नल नोटिफिकेशन नहीं होता है, ये इंटरनल मोबाइल उठाना, जो आप तो कह रहे हो सोशल मीडिया बार बार मोबाइल उठाना, व्हाट्सएप चेक करना, ईमेल चेक करना, फला, दैट्स एन इंटरनल। वो कोई नोटिफिकेशन तो आया ही नहीं, यू आर जस्ट एक्साइटेड टू जस्ट ओपन इट। दैट्स हाउ पीपल गेट हुक्ड. If this is useful, interesting, let me know in the comments or the chat box, wherever you get an opportunity to put a comment, so that we can make more video like this.